Yeah, good evening, all traders out there. You had a strong dip in the market, but it is not a surprise. ये there was a geopolitical concern था. दूसरा आपका जो concern था वो हमने देख रहे हैं कि trend already down हो चुका था. As I said, price action जो है always follow. So this is the markets. Nifty. Just give me a minute. मेरी गलती है. I put my mobile on silent unless it's disturbing all of us. Done. So या शर्मा जी, हाउ वाज योर डे टुडे? ग्रेट टू सी आप रेगुलरली आप सब आते हो, which makes the session, and we are trying to build a community of traders. Good. Right. So let's start on the markets, which is Nifty. Yeah, I have prepared your plan for the day, but before that, I have to read out the disclaimer. मैं डिस्क्लेमर रीड करता हूँ. दिस इज फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल एडवाइस. आज 2 तारीख का जो प्लान है, विच इज टुडे, विच इज फॉर कल होली की छुट्टी है. फाइन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. मार्केट गैप डाउन हुआ है, ट्रेंड इज डाउन. रेजिस्टेंस मैंने 200 डीएमए के आसपास का लिया है. सपोर्ट इज द लास्ट लो. 200 डे में रेलेवेंस इतना भी नहीं रहेगा. द पुट कॉल इज शोइंग दैट वॉलेटिलिटी इज देयर. पीसीआर अभी भी 0.73 का. स्ट्रैडल प्राइस काफी हाई है बैंक निफ्टी का फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, विच इज 535. बजट में भी हमने देखा था, आई थिंक इट वाज अराउंड 450, सो इट्स इवन हायर देन दैट. सो आईवी हैज स्पाइक्ड अप लाइक एनीथिंग and it's quite normal market में जो spike आती है. So IV cool off should happen, but let's see. This is the event, how events plays out. So now market अगर हम देखते हैं तो जो डाउन ट्रेंड हमने सिग्नल किया था, इफ ऑल द हाई रेटेड ट्रेडर गुड आफ्टरनून, जैसे ये लो मार्केट ने तोड़ा, ट्रेंड डाउन था मार्केट में. व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड ये जो छोटे पुल बैक्स आते हैं ना, these are called sucker rallies. इसमें हमको ऐसा लगता है मार्केट घूम गया. So always be aware of it. ध्यान दो आप उसमें. And the trend is clearly down. How many followed this? Give me yes or no. So that's where the market's direction changed to down. And कहावत है, the trend is your friend till it bends at the very end. यहाँ पे trend ने bend ले लिया था. So now back to overbought oversold. काफी market गिर जाता है तो support के साथ this is the low, which is the support which it has tested today. And the candle is green, but ये जो green candle है, don't look in isolation is green. ये जो green candle एक support पे आई है, plus ये gap के साथ आई है. So इतना बड़ा जब downfall होता है, gap down, so always एक exhaustion हो जाता है. And this is also coming at or around this base. So ये base already market ने test कर चुके हैं. So we can say yes, around today's lows where everything remaining constant in terms of geopolitical concerns, we have seen a low. Now the next decline in the markets will be break below this low. ये लो को आप ध्यान में रखो. ये ऐसा लो नहीं है, we can say it as bottom. All we can say is support with the exhaustion gap has been tested. और exhaustion gap इसलिए बोलते हैं कि support पे gap down support पे market हुआ. So एक तरह से एक exhaustion move था. जैसे इसको आप देखो, there was a big gap up, tested the all time high. इसको हम exhaustion gap बोलते हैं. But exhaustion gap needs confirmation. 2-3 दिन wait करना पड़ेगा whether to see we have established a support or not. Everybody clear on the downside level? And once this breaks, then we'll see another rate of decline. So मैं आज के low पे और ये base पे एक support mark कर दे रहा हूँ. And support can whipsaw, which means ठीक है 25, 50, 100 पॉइंट से whipsaw कर सकता है because volatility is news based, event based, and it's geopolitical concern based. तो कोई भी एक particular level पे volatility आएगी. उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो बोलिंगर बैंड्स है वो क्या दिखा रहा है. देखिए मंदी का दौर अगर चलता है ना मार्केट में, जो हम शॉर्ट टर्म ट्रेड बोलते हैं, मार्केट कैन पुश. आज मार्केट हैज गॉन बिलो द लोअर बैंड. So on the daily chart, बहुत ज़्यादा oversold है market. It's highly oversold. Let us go and check the weekly chart. Even in weekly chart, market is oversold. Let's go and check the monthly chart. ये तीनों time frame पे देख लेते हैं. But daily, weekly is okay. Monthly, it's at the middle band. So वो तरह से
market has become highly oversold. Now, for us to be further bearish on the markets, see, market नीचे जा सकता है. Geopolitical risks को आप define नहीं कर सकते हो कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, कैंडल पे खत्म हो जाएगा. You have to give the required time. अगर 2-4 दिन का तो टाइम आपको देना पड़ेगा. In between, do your day trading. एंड अगर ये सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस का प्यारा ऑलवेज जो गैप डाउन होता है ना मार्केट का, वो गैप डाउन ही रेजिस्टेंस बन जाता, विच इज समवेयर अराउंड द 200 डीएमए. तो 25,100 का रेजिस्टेंस लेके आज का लो पकड़ के मार्केट विल बी वोलेटाइल. अगर हम 500 का स्ट्रैडल प्राइस देखते हैं तो ये क्लोज से आप देखो, ये करीब 250 ऊपर 250 नीचे. दैट्स व्हाट अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स रेंज. So everybody clear on the Nifty part? Yes, आगे चलते हैं for Bank Nifty. Yeah, day trader gives me a thumbs up. I also give you the same, sir. Great to see you all there. And now let's go to Bank Nifty. So volatility का दौर है, आपको झेलना पड़ेगा as a trader. As we discussed in the morning, you are all there. मैंने बोला पहले 15 मिनट रुक जाओ. रुकने के बाद क्लियर था कि फिर से एक नरमी आया था. देन अगेन वी गॉट अ बॉल. सो बैंक निफ्टी जो है आज ओवरसोल्ड हुआ है. अभी भी बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी बिकॉज अब वो गैप तक आया ही नहीं है. निफ्टी ये लो तक आया, बैंक निफ्टी इज होल्डिंग आउट. पीसीआर में भी वो दिखा रहा है. विल चेक द पीसीआर. सो लेट्स गो एंड चेक द बैंक निफ्टी. आज भी बैंक निफ्टी आल्सो गैप्ड डाउन and trend down है बैंक निफ्टी का. नो डाउट. रेजिस्टेंस 60,500, सपोर्ट 59,100. टेक्निकल स्टडी है 200 डीएमए में प्लॉट करके दिखा रहा हूँ आपको. सो बैंक निफ्टी ने क्लीन ब्रेकडाउन दिया नहीं है टू 50 डीएमए का. तो 50 डीएमए के आसपास बैंक निफ्टी अटकता है. जब भी एवरेजेस 200 और 50 प्राइस क्रिस क्रॉस करता है तो आपको एक वोलेटिलिटी देखने मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट. बैंक निफ्टी ने गैप डाउन किया 50 के नीचे. इट वाज लाइक दिस आल्सो. 50 के नीचे गैप डाउन किया एंड इट क्लोज्ड अराउंड दैट. सो अगर ये आज का हाई निकल लिया तो बैंक निफ्टी माइट क्लोज दिस गैप. सो रेजिस्टेंस ये लेके चलते बैंक निफ्टी में. और बैंक में सपोर्ट आज के लो पे डाल रहा हूँ सब जगह. ये टूटा तो देन विल सी द नेक्स्ट लेग ऑफ अ डिक्लाइन, जिसमें बैंक निफ्टी भी ये जो पेंडिंग गैप है ये गैप भरने आएगा. गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो मार्केट आज एक बार रुका है. इट हैज टेकन अ पॉज, स्टॉल एंड अ ब्रीदर. नथिंग मोर देन दैट. सो बट पैनिक में अगर आप गिरते बाजार भाव पे मंदी करते हो, मार्केट ऑलवेज गिव्स यू पुल बैक और अ बाउंस एंड यू गेट स्टॉप्ड आउट. तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी बहुत हाई दिखानी पड़ेगी एज अ ट्रेडर. वेट एंड वॉच काफी रखना है आपको. वेट फॉर योर फॉर्मेशंस एंड देन टेक अ ट्रेड. अग्रीइंग एवरीबॉडी? दिस इज निफ्टी, बैंक निफ्टी. एंड अगर बैंक निफ्टी की ओआई की बात करते हैं तो कॉल में 60,500, पुट में 59,500. पीसीआर अभी भी बैंक निफ्टी का 1.03 है. सो बैंक निफ्टी में अभी भी कॉल्स एंड पुट्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ ओवर. बट एक चीज आप मार्क करो, वोलेटिलिटी स्पाइक की है. स्टैडल प्राइस जो कल तक हम देख रहे थे 1500-1400 के आसपास था, करीब करीब 2000 हो गया, विच इज 1919. So volatility has spiked, which can be seen in the straddle price, and the trend is down on both. But आज का लो को आप मान के चलो. Pivot का मतलब क्या होता है? Till it's not breached, a temporary low might be in place. Once broken, again see a decline. So आज के लो को मैं pivot low मार्क करके जा रहा हूँ, but I'm not taking it as some sort of a panic bottom. And एक दिन में पता भी नहीं चलता. We have to wait for 2 to 3 days. So everybody clear? Today's low is a pivot. Give me a yes all. Daily trader, great to see you, Sharma ji, Nanavati ji also. Yeah, we are having a good group of traders out there. So that's how you'll have to approach the markets. और फिर हम गोल्ड देख रहे हैं. गोल्ड अगर how many of you went through the Substack weekly note? Give me a yes or a no. और फिर हम अगर गोल्ड भी देखते हैं, which we generally do in MCX futures. गोल्ड में हम देख रहे थे साइडवेज ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट आ चुका था गोल्ड में. दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग, जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोल रहे थे गोल्ड को.
But yes, itna strong move is event based, no doubt about it. But yes, the pattern had a breakout, and breakout के बाद भी इधर 2-3 दिन का consolidation चला, and now gold is going up. So this up move in gold, see the moment आपको एक triangle breakout दिखता है ना, a breakout triangle minimum price objective जो कि target बनता हुआ एक channel बन जाता है. Remember that. A triangle breakout, when it happens, that breakout becomes a channel, lower high boundary mark कर दो, post a breakout it goes and hits the channel high. So will you all able to do this? Next time जब breakout आ रहा आप channel mark कर सकोगे सब? Triangle breakout का first target channel high आ जाता है. Okay, so that's where the gold is. But channel high आ गया. Let's see if there is a blow off. ये भाव कल देता है gold. So then we don't have any resistance in gold till the all time high, which is 1,81,000. आज 70 के आसपास है, 1,70,000 और 10-11,000 के एक तेजी निकल सकता है गोल्ड में. But everything, the volatility, the spikes, the movements is coming from the geopolitical concern side of it. सिल्वर देखते हैं. तो अगर सिल्वर में हम जाते हैं तो सिल्वर इज स्टिल कंसोलिडेटिंग. आज एक ब्रेक आया एंड इट्स अ गैप अप. सो सिल्वर इज मोर क्वाइट कंपेयर्ड टू गोल्ड, एंड दिस फ्रॉम दिस बेस इट हैज गिवन अस एक अच्छा ब्रेकआउट दिया सिल्वर ने. सो दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग इन सिल्वर, एंड फ्रॉम देयर इट हैज मूव्ड अप. सो अभी आप सिल्वर में यू कैन नाउ क्रिएट अ वेरी एक कॉम्पैक्ट चैनल जिसको हम बोलते हैं. 2-3 कैंडल पे channel बन जाती है. So that's how the channel would be in silver. Because MCX में I'll just take you to silver on this thing, comics. The channel is very compact. So give me a minute, मैं load कर लेता हूँ. Yeah, that's silver futures. Why it's coming everywhere here only. Yeah, that's silver futures on comics. तो ये मैं चैनल बना के ही रखा है. If you went through the Substack weekly, you'll find it. So silver is moving channel. Let it stay in this channel. Volatility channel में ही रहेगी. Upside of the channel अगर कल आज के लिए हम देख रहे हैं तो $99.60 है. So that's how the silver is going. But looks like जो upswing है, एक recent high के आसपास का resistance band, it should go test. In that point of time, the price action as far as आपका जो metals है, gold and silver are positive bullish right now. So before I end, I'll just give you the plan for the day. So that's 2nd of March. I'll change the date. ये आप कल के लिए, but generally I keep the date on the day which we have done. But yeah, if somebody is watching, तो इसको मैं 4 तारीख कर देता हूँ. So this is for 4th. So tomorrow is a Holi. Everybody enjoy the Holi. Yeah, Sarmaji says XAGUST, that's silver. So Ranavati ji says, do we have pattern in gold? Yeah, absolutely. You will have in volatility shakeouts. You will have pattern within the patterns. You have a bigger pattern, and then in between you have a consolidation pattern. That's how market price action forms. So when there is a period of high volatility. So wish you all the best. Tomorrow is a holiday. सब रेस्ट करो, आराम करो, मजे में होली खेलो. कोई पोजीशन खुला रख के गया नहीं है. So enjoy your day, enjoy your festivities out there, and we'll again meet on Wednesday मिलते हैं सवेरे 8:45 को. Thanks. Have a nice day, everybody.